Messages shine when they are done with style, or when they are written with style. Chapter objective: to hone the learner's skill in choosing the right words, arranging them properly in sentences, developing the points into paragraphs, and organizing them all into the text of a report in Reader. कम्युनिकेशन कोर, क्या मकसद है जब आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं किसी स्टाइल के साथ? की एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग स्टाइल आर प्रिसीजन, यानी कम अल्फाज में अपना मैसेज ज्यादा बेहतर तरीके से पेश करना. दिस इज कॉल्ड प्रिसाइज होना. यस, कम किफायत शारी जिसको कहते हैं कि भाई थोड़ा लिखें लेकिन बड़ा ही जामे लिखें. Conciseness and plainness, ये सारी चीजें इसमें शामिल है. Precision can be attained by choosing a specific word instead of a general term and a concrete word instead of an abstract word. Most appropriate choice of words जो है, that is key to writing a good report. This is called precision. इस तरह आप किसी को गोली मारे तो बजाय इसके कि 10 गोलियां मार के एक चीज को मारे, अगर एक ही निशाना बेहतरीन तरीके से बांध के आप मारे तो that is called precision. इस तरह एक मिसाइल का टेस्ट किया जाता है तो प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स उनको कहा जाता है, जो कि बिल्कुल निशाने पे जाके लगते हैं. Conciseness consists in using only those words which perform a semantic function. The use of short and familiar words contributes to the plainness in style. Clichés, jargons, and foreign expressions should be used only when absolutely essential. Clichés वो words होते हैं जो कि आम अतवार में बोले जाते हैं और जिनमें रूह शामिल नहीं होती, लेकिन आप बिला वजह बोलते रहते हैं कि भी आपको मिलके बहुत खुशी हुई. ये भी एक क्लीशे है, चाहे आपको दिल में बिल्कुल खुशी ना हो रही है, लेकिन महफिल में किसी में जाने का तकाजा ये है कि आप वहां पे कहें कि आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, दोबारा आइएगा, आप की राह हम तकते हुए बैठे हैं यहाँ पे. These are all cliches. Basically शायद आप दिल में कह रहे हो कि ना यार आखिरी मुलाकात हो तो बेहतर है, मेरा कोई शौक नहीं इनसे मिलना. तो these are basically cliches. Jargons होते हैं complicated किस्म के expressions या difficult expressions, जिसको theory से भरे हुए expressions को jargons कहते हैं. And foreign expressions which come from abroad or from some other language or other cultures. Adverbs and other modifiers, elaborate prepositions and conjunctions and long phrases for introducing a new data. The sentences should be either simple or compound. Complex ones should be avoided as far as possible. The matter should be divided into short inductive phrases, placing the topic sentence in the beginning. ये किसी हल्का हल्का शोर आ रहा है which is quite nasty, तो इसको kindly जरा कंट्रोल करें. The matter should be divided into short inductive paragraphs, placing the topic sentence in the beginning. However, to make the report more attractive, it is advisable to vary the length of sentences as well as paragraphs. Definition of style. Style से क्या मुराद है जब आप रिपोर्ट लिखते हैं? If you try to analyze the traits that make a person smart and pleasing, you will perhaps be able to list a few items. But in all probability, you will give up soon enough saying, well, it is the total effect of his personality that gives me this impression. So is the case with style. Styling में ये जरूरी नहीं है कि आप किसी का बारीक नाक देखें, उसके चेहरे पे लगी हुई अच्छी क्रीम देखें, या उसका परफ्यूम की चॉइस देखें, या अच्छा बॉडी स्प्रे देखें, या नेकटाई देखें, या वेस्टकोट देखें, या कोट देखें, तो तब कहें कि ये चीजें मिल के आपकी पर्सनैलिटी को बेहतरीन पर्सनैलिटी बना रही है. अगर आपकी बॉडी पे या आपके जिस्म पे ये चीजें ना होती तो आप इतने खूबसूरत ना लगते. लेकिन एक चीज ये कि भाई तमाम चीजों को अप्रोप्रिएटली यूज करना, दिस इज ऑल्सो स्टाइल. कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही महंगे लिबास पहन के भी खूबसूरत नहीं लगते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिंप्लिसिटी में भी बड़े ग्रेसफुल लगते हैं. तो दिस इज एक्चुअली द ओवरऑल मिक्सिंग ऑफ एवरीथिंग इन वंस पर्सनालिटी दैट एक्चुअली अपील्स यू एज स्टाइलिश. इसी को कहते हैं कि भाई, और राइटिंग में भी ये चीज कारामत है कि यू आर नॉट सपोज्ड टू एम्बेलिश योर एक्सप्रेशन थ्रू difficult words, difficult terms, or etc. Rather, if you choose expressions which are appropriate and pointed and precise, job is well done.
So is the case with style. It is difficult to specify the elements that constitute the style of a piece of writing. Yet several writers have made an attempt to define style. Jonathan Swift thought, यार ये किसी का माइक खुला है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ऑफ कर लें. मैं इधर से कोशिश कर रहा हूँ म्यूट ऑल करने की, लेकिन फिर भी फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू म्यूट इट. तो काइंडली अपना माइक जरा ऑफ कर लें. यार वो अत्तर को मना कर देते हैं. So, Jonathan Swift, एक famous writer है, thought that style was proper words in proper places. अगर आप बेहतरीन अल्फाज को बेहतरीन ऑर्डर में प्लेस करके लिखेंगे तो this is called stylish. लेकिन अगर आप बेहतरीन वर्ड्स चूज किए हैं लेकिन आपने उनको मिसअप्रोप्रिएट किया है, उनको प्रॉपर स्पेस पे नहीं लिखा, तो then this is not a very stylish mode of writing. Lord Chesterfield said that style is the dress of thoughts. आपके ख्यालात के लिबादे का नाम स्टाइल है. In the words of Cardinal Newman, style is a thinking out into language. Emerson said, a man's style is his mind's voice. किसी भी शख्स के दिमाग की या सोचने की अंदाज की आवाज का नाम स्टाइल है. Style is not something which is added after the writing work is over, a sort of topping on the cake. In fact, style is like the grain in wood. The style of a work is not a sort of veneer glued over the outside. On the contrary, it is like a pattern that goes all the way through a manifestation of the growth and development of the structure of the tree itself. तमाम के तमाम writing के अंदर मौजूद, एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद चीज का नाम स्टाइल है. स्टाइल ऐसी चीज नहीं जिस तरह आप केक बेक करते हैं उसके बाद उसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम डाल के स्टाइल बना लेते हैं. नो, स्टाइल इज एक्चुअली थ्रू एंड थ्रू. इट ट्रेवल्स विद every sentence that you write throughout. All writing has style. Call it poor, good, excellent, personal, impersonal, or by any other suitable epithet. तो कोई भी writing जो है उसमें इनमें से कोई भी एक स्टाइल हो सकता है. कोई राइटिंग हो सकती है पुअर स्टाइल की राइटिंग, कुछ गुड स्टाइल की राइटिंग, कुछ एक्सीलेंट स्टाइल की राइटिंग, कुछ पर्सनल और कुछ इम्पर्सनल और बाय एनी अदर सूटेबल एपिथेट. पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग वो है जिसमें आप अपने बारे में सारा जिक्र कर रहे हो कि अभी मुझे इस तरह का लिबास पसंद है, मेरी सोच ये कहती है, मेरे मुताबिक ये और मेरे मुताबिक ये. और इम्पर्सनल स्टाइल में ये कि आप न्यूट्रल हो के बात कर रहे हो, आप अपनी पर्सनैलिटी को या अपनी जात को डिस्पैशनेटली रख के एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन दे रहे हो, बिल्कुल ही न्यूट्रल. तो ये स्टाइल के ऊपर मबनी है कि आप किस स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं. इन दिस रिस्पेक्ट स्टाइल इज लाइक the character attributed to men, be it good or bad. And just as no two human beings are exactly alike, the style of every person is unique. Even the most impersonal writing has individual traits. If you give two persons the same data and ask them to write a report, you will find difference in their choice of words, construction of sentences, development of paragraphs, and presentation of the total information. It is these features which distinguish one person's writing from another's that may collectively be called style. In other words, style is the way you write. हर इंसान का style different. जिस तरह हर इंसान का driving का style भी different. कुछ लोग तेज चलाते हैं, कुछ स्लो चलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि जिनका अपने मुनफरिद स्टाइल है. कुछ फौरन गाड़ी को 100 पे ले जाते हैं, कुछ ये है कि वो 50 से ऊपर नहीं लेके जाते. इसी तरह राइटिंग में भी ऐसा ही है कि everyone has his own individual style. आप सेम डेटा दे दो अपनी ही क्लास के 2 स्टूडेंट्स को तो वो अपनी कॉम्पिटेंस और अपने स्टाइल के मुताबिक डिफरेंट पीस ऑफ राइटिंग लेके आपके साथ मेरे सामने पेश करेंगे. However, our intention is not to enter into an academic discussion on what style is, but to consider from a particular point of view what elements of writing contribute to making this report an effective piece of communication. किसी भी रिपोर्ट को effective piece of communication बनाने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? Let's see. The scientific attitude. Most important is scientific attitude. आप साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन whenever you write a report, you are supposed to follow scientific attitude. Scientific attitude में ये कि भाई fact finding mission पे आपने जाना है. You are supposed to be looking for results. Since the main purpose of a report is the presentation of facts, it should be able to command the attention of the reader and to clearly convey to him the message. To achieve this,
is not an easy task. Your primary concern then should be to ensure that the language of your report is clear and readable. Precise and concrete, you will need to develop what may be called a scientific attitude in writing. This will help you remain objective in your approach or to problems, impartial in the analysis of data, and truthful in the presentation of facts. The kind of language that reflects these qualities is terse, direct, and informative. The three figures of speech and emotive words have no place in it. The requirements of such a style are best conveyed in Bishop Spratt's words, which describe the ideal the Royal Society placed before its members. It exhorted them to reject all amplifications, digressions, and swellings of style, to return back to the primitive purity and shortness, while men delivered so many things almost in an equal number of words. They, the society, exacted from all their members a close, naked, natural way of speaking, positive expressions, clear senses, a native easiness, bringing all things as near the mathematical plainness as they can, and preferring the language of artisans, countrymen, and merchants before that of wits or scholars. To attain this mathematical plainness should be your aim. The ability to make one's writing simple is the mark of superior mind. It is the lazy who seek refuge in overused and ornamental words. But the style of reports need neither be rigid, stiff, and dull, nor can there be any one best style for reporting. On the other hand, report writing allows the same freedom of choice of diction se murad style, and structure as any other kind of writing. Variety and creativity are the characteristics of all human communication, and a report is no exception. It is written by one human being and read by another human being. Remember that the reader of a report is interested in what you say and not in you or your language. आपकी ना language में और ना ही आप में वो interested है. वो किस जो चीज आपने लिख के दी उसमें interested है, और वो चीज है clarity मांगती है. वो चीज मांगती है mathematical plainness. Mathematical plainness से मुराद है कि 2 जमा 2 4 statement होनी चाहिए उसके अंदर clear factual data होना चाहिए, and there should not be difficult expression to impress that person. You should keep your personality out of this kind of report. Science advises that when a man is talking science subject, the little word I should play no part in the exposition. तो जब आप साइंस का काम कर रहे हैं तो आपकी जात और आपका पर्सनल बायस जीरो होना चाहिए. आपकी जात उसमें कहीं नजर नहीं आनी चाहिए. ये नहीं पता चलना चाहिए कि तजर्बा किया किसने, बल्कि ये पता चलना चाहिए कि तजर्बा है क्या. Basic thing is the substance that is being proven through the experiment, not the person who is doing it. The least important thing है शख्स, right? तो next, गुफ्तगू का भी आदाब है. इसको भी कहा जाता है कि भाई सबसे घटिया गुफ्तगू वो है जिसमें लोग लोगों को डिस्कस करते हैं. उससे कम घटिया गुफ्तगू वो है जिसमें जगहों के को डिस्कस किया जाता है. और सबसे बेहतरीन गुफ्तगू वो है जिसमें आइडियाज को, ख्यालात को, फिलोसॉफिकल आइडियाज को डिबेट किया जाता है, उनके ऊपर गुफ्तगू की जाती है. तो सबसे घटिया गुफ्तगू वो है जिसमें लोगों की बदखुइयां की जाती हैं या लोगों के बारे में गुफ्तगू की जाती है. तो इसी में आई भी वही चीज है कि भी अगर आप अपने साइंटिफिक राइटिंग में अपना आप उसमें बार बार जाहिर कर रहे हो कि मैंने ये किया, मेरा ये कमाल है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, दैट इज एब्सोल्युटली बोगस ब्रांड ऑफ राइटिंग, जिसमें आप अपनी ही तारीफें किए जा रहे हैं या अपने आप को माइनस करने के लिए तैयार ही नहीं है. यानी आप उसमें इस कदर इनफरादियत लाना चाह रहे हैं अपने काम में, या अपनी जात को मिन्हा किए बगैर उसमें गुफ्तगू में शामिल कर रहे हो. दैट ब्रांड ऑफ डिस्कशन इज स्टॉपी. तो गुफ्तगू में भी यही चीज है कि वो डिस्कसिंग पीपल इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन. डिस्कसिंग प्लेसेस इज slightly lesser in degree in terms of quality of discussions, but the most profound and best form of discussion is the one in which people discuss ideas, notions, debate, stuff like this. इसी तरह आप जिस तरह आपको टीवी में नजर आता है कि वो डिबेट्स जिसमें सियासी पार्टियां एक दूसरे के बारे में गंद उछाल रही होती हैं, एक दूसरे को लगती बड़ी मसालेदार गुफ्तगू है, लेकिन सबसे घटिया गुफ्तगू वही हुआ करती है, क्योंकि लोग
लोगों पे तंज कर रहे होते हैं, लोगों को नफ्से मजमून बना के एक दूसरे पे गंद उछाल रहे होते हैं। वो गुफ्तगू जिसमें प्लेसेस का जिक्र हो लेकिन लोगों का ना हो, वो कम दर्जे में जरा घटिया गुफ्तगू। लेकिन वो गुफ्तगू जिसमें आप आइडियाज डिबेट कर रहे हैं, जिसमें नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिस्ट्री, बाबरिज्म, प्री इस्लामिक सोसाइटी, जिस ऐसी गुफ्तगू जिसमें नोशंस या आइडियाज की डिबेट हो रही हो, वो सबसे आला किस्म की गुफ्तगू होती है। जिस तरह आपको अक्सर टीवी वगैरह में भी नजर आता है, जावेद गामदी या कोई और मजहबी स्कॉलर जब आइडियाज की डिबेट करते हैं तो सीरियस लिसनर जो है मजबूर होता है ऐसी गुफ्तगू की तरफ। और किसी भी कॉन्फ्रेंस वगैरह में जब आप जाएं, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में, देयर टू इफ यू फाइंड a speaker talk about some academic subject, you are impressed and you always say that this is a serious conversation. This is not something which is based upon backbiting and discussion around certain people or personalities. So your sole concern should be to translate your concepts into words, sentences, and paragraphs which will convey your meaning precisely to the reader and activate in him the response you are seeking. For cultivating this kind of style, many report writers and organizations advocate the use of the passive voice and the third person. A report writer, as far as possible, must approach his subject with the scientist's objectivity, detachment, and passion for truth. But for achieving these qualities, he need not completely avoid the use of the active voice and the first person. Archimedes जिसको उर्दू में कहते हैं, Archimedes, excited by his discovery of the law of floating bodies, leapt out from his bathtub and ran into the street shouting, "Eureka!" a triumphant cry of discovery, meaning, "I have found it." In fact, what matters in report writing is honesty about facts and their presentation in a language the reader can comprehend. Present-day usage permits even highly objective types of writing a slightly relaxed, casual, and personal style. This, of course, has put a greater responsibility on the report writer. He can no longer defend his lack of creativity on the plea that he has to follow a set pattern of writing. Instead, he will have to consider more carefully the total situation and make decisions regarding his choice of language every time he writes a report. More alternatives demand greater maturity in decision-making. One pattern will not suit all situations, since every report is written to meet a unique situation. In many cases, direct statements in active voice do make the writing vigorous, lively, and less wordy. Look at the following examples. Number one, passive. Reports on this subject have been written by several students. Suggested revision. Several students have written reports on this subject. So in many cases, direct statements in active voice do make the writing vigorous, lively, and less wordy. Look at the following example. ये passive voice में दिया गया reports on the subject have been written by several students. ये complex statement है, लेकिन suggested revision ये क्या की गई है इसमें, किस तरह का होना चाहिए. Several students have written reports on this subject. ये एक सीधा active voice में लिखा हुआ sentence है जो कि ज़्यादा अच्छा लग रहा है. Then passive voice. Various devices have been experimented on, have given very encouraging results. Suggested revision. The experiments on various devices have given very encouraging results. सीधा straight forward sentence है, कोई complication नहीं है. अब जरा दोबारा उसको पढ़िएगा. Various devices that have been experimented on have given very encouraging results. ये बहुत ही convoluted और passive voice का sentence है जब वेबसाइट. Thank you. So passive voice जो है उसको अवॉइड करें और एक्टिव वॉइस में लिखना जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उसको लिखने से इज्तनाब करें और एक्टिव वॉइस में लिखें. अगेन थर्ड एग्जांपल passive. Enough data were collected by them to write the reports. Suggested revision. They collected enough data to write the report. तो एक्टिव वॉइस में सीधा है. 4. Passive. The basic for inclusion of information relating to previous year in table 6 below is the availability of additional data which can be easily collected and also to give a more comprehensive picture. Just a revision, since the data relating to previous years were easily available, we have included them in table 6 below to give a more comprehensive report. 5. Passive again. Committee was appointed by All India Steel Manufacturers Organization to study
the possibility of exporting steel. It was requested to examine particularly this possibility in European countries from where certain important components of steel plants are imported. So this revision, the All India Steel Manufacturers Organization appointed a committee to study the possibility of exporting steel, particularly to European countries, which supply certain important components of steel plants. Now, based upon these examples, 5 examples where it is urged that you are supposed to write in active voice, these are the observations. The best criterion for the use of first person is whether you have personally collected the data and written the report. First person से मुराद है I, यानी आप खुद. तो I का इस्तेमाल सिर्फ उसी वक्त इजाजत भी है उसकी जब आप ने कोई डेटा खुद इकट्ठा किया. When, for example, you have written a thesis, only then you are allowed to use expression I. Otherwise, I को आपने हमेशा में ना करना है. और second person से मुराद है you. I के सामने अगर कुछ दूसरा शख्स खड़ा होगा तो वो you ही हो सकता है. और थर्ड पर्सन वो है जो कि मौजूद नहीं है. He यानी मैं, तुम और वो. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, second person singular और third person singular respectively है I, you और he. और first person plural, I का plural है we, you का plural भी you ही होगा क्योंकि चाहे you एक हो या you ज्यादा हो वो you ही रहेगा. और इस तरह he का plural third person plural बनता है they. तो I का plural we, you का plural you और he का plural they. I, you, and he are the 3 persons. First person singular, second person singular, and third person singular. These are basic grammar lessons which everybody is supposed to know. So here when we are talking about first person singular. But if you have done the work as a member of a group or on behalf of a group, the use of I is not advisable. Some writers suggest that in such a case, we should be used. यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल आप वहां पे यूज करेंगे. अगर आपने ग्रुप में शामिल होकर काम किया तो आप हमेशा कहेंगे हमने ये काम किया, हम फिर वहां चले गए. जिस तरह अक्सर आजकल वीलॉग्स बनाने का रिवाज है. खुद मेरा एक कजन वीलॉग बनाता है आजकल. तो वीलॉग आप अकेले नहीं बनाते, आपके साथ एक कम से कम कैमरामैन तो जरूर होता है. तो आप एक टीम की सूरत में काम करते हैं. आपके साथ फिर एक वीडियो एडिटर भी काम करता है, उसके साथ ग्राफिक्स का भी काम उसमें होता है, उसके साथ साथ आपको म्यूजिक भी शामिल करना होता है. तो यू वर्क एज ए टीम मेंबर. तो उसमें जब आप वीलॉग में परफॉर्म कर रहे होते हैं, जगह विजिट कर रहे होते हैं, तो यू ऑलवेज यूज एक्सप्रेशन वी वेंट देयर. हम फिर उसके बाद वहां चले गए, फिर हमने वहां पे खाना खाया. तो दिस इज हाउ यू यूज फर्स्ट पर्सन प्लूरल एज योर सब्जेक्ट as far as writing is concerned or as far as making report is concerned. But we is a vogue word as it can also refer to the writer and the reader. Sometimes it has no specific reference and is used for human beings in general. The important thing is to remember is that the reader should know who the agent is. If he is likely to miss it, it is better to mention the agent clearly, whatever be the voice, active or passive you choose. However, a report such as the following in which I features prominently would certainly irritate the reader. ऐसी रिपोर्ट जिसमें बार बार आई आ रहा हो तो वो ऐसी गुफ्तगू होगी जिसमें आप अनापरस्ती जिसको कहते हैं या अनायत जो है, ये इकबाल की खुद ही नहीं है बल्कि ये सेल्फ लव के तनाजुर में वो रिपोर्ट देखी जाएगी कि ये शख्स अपने आप को इस रिपोर्ट में बहुत ही ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड तौर पे पेश कर रहा है. तो आप बोर हो जाते हैं ऐसी रिपोर्ट में. तो इफ यू यूज आई टू मच, it actually spoils the very beauty of your writing. So this meeting will end in 10 minutes. Let's go ahead as far as we can. However, a report such as the following in which I features prominently would certainly irritate the reader. I took in a nickel crucible, weighed amount of the complex and mixed well with 1:1 mixture of sodium peroxide and sodium carbonate. I first heated the crucible gently and then for 2 hours at red heat. I cooled the crucible often
after fusion, and I extracted with water the fusion product and filter for neutralizing the excess of sodium carbonate present in water. I went on adding 40% hydrochloric acid until effervescence ceased. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस 4 या 5 लाइनों के पैराग्राफ में I की भरमार हुई है. Some organizations have definite views on this matter and give detailed instructions about the use of first or third person and the active passive voice and other matters of style. If you belong to such an organization, follow the prevailing practice. You may well have discovered that the style recommended is not strictly suited to your needs. In that case, it is desirable that you make the necessary modifications. To sum up, you should be objective in writing your report, but try to make it readable and clear. As pointed out earlier, in a bid to achieve one quality in your style, you should not sacrifice another. In the sections that follow, we should discuss how to attain readability and suggest some ways of achieving clarity. In fact, these qualities must often go together. We treat them separately only for the sake of convenience. Readability. A report has an advantage over some other forms of composition. It is always written for a specific readership. If the reader belongs to your organization, you should know him, the range of his intellectual ability, his level of education and background knowledge, and what he expects from you. If you have exchanged communications with him in the past, your tasks will be easier still. Even if you do not know that reader, it is not difficult to visualize his needs. It would be safe to assume in many cases that the reader is as intelligent as you are, but he does not have the specialist knowledge you have on the subject. There will, however, be situations in which you are asked to write a report for a group of people who are specialists in the same area. Obviously, the language you use for such a report will be different from language you use in a report meant for people whose field of activity is different. In all situations, बच्चे को जरा शोर आ रहा है, जरा अपना माइक बंद करें प्लीज. सर आप काइंडली पार्टिसिपेंट्स में जाके ना खुद से भी अनम्यूट उसको म्यूट कर सकते हैं. सो पहले आयशा अकरम आप सुन रही हैं? आयशा, आर यू देयर? आयशा सर काइंडली आप म्यूट कर दें पार्टिसिपेंट्स में जाके ना. I did. I hope it won't echo now. Right. Thank you. So with the background. Okay. So in all situations, you should attempt to make your language reader-oriented. This is what we mean when we say speak in a language your listeners can understand. In the words of Lord Samuel, care should be taken not that the reader may understand if he will, but that he must understand whether he will or not. This is the ideal for which you should work. आपकी writing ऐसी होनी चाहिए कि हर सूरत पढ़ने वाले को वो समझ आए. अगर आपकी लैंग्वेज में डिफिकल्ट एक्सप्रेशंस हैं और वो समझ नहीं आ रही है तो चाहे जितनी मर्जी इंफॉर्मेटिव हो वो रिपोर्ट, लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं होगा. तो रीडर ओरिएंटेड राइटिंग शुड बी रिटन or should be produced. To ensure readability, another factor to bear in mind is your relationship with the reader. The style of a report meant for circulation among subordinates only is likely to be different from a report on the same subject to be circulated to the top management or among other organizations. Readability formulas. Some writers have tried to find in concrete terms what makes a piece of writing readable or difficult to read. These researchers are based on extensive studies of a variety of written material. The findings are in the form of formulas by which a piece of writing can be graded and its difficulty level stated by an index. But such formulas are of limited use in as much as you can not write an effective report by following the formula. At best, they can serve as a rough guide to test whether your report is likely to be understood by the reader or it is difficult. So, बाकी चीजें इंशाल्लाह next class में.